Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is nutrition in plants. Nutrition in plants. Nutrition, it is a life process that takes place in all living organisms. Plants are also living. Plants also require food which can supply energy for their various metabolic activities. Though animals they can move from one place to another, but plants they stand still at one place and make their own food. Plants also show movement, but they do not show locomotion. Now, how plants make their own food? You know, plants are autotrophs, or we can say plants are autotrophic organisms. They synthesize their own food by the process of photosynthesis. Photo, that means self, and synthesis means to build. Thus, photosynthesis means building up by light. Thus, plants जो है they use the energy in sunlight and prepare their food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. Chlorophyll जो होता है बेटा, it's present in green colored bodies of green leaves that are known as chloroplasts, जिनमें ये chlorophyll होता है. Also remember these chloroplasts, they are sites of photosynthesis. ये कभी objective में आता है, sites of photosynthesis. Plants are they are chloroplasts. और जो chloroplasts होते हैं they are disc like organelles that are present in mesophyll cells of green leaves in the middle layer. They are like this. In the mesophyll cells, that is present in middle layer of these green leaves, these are chloroplasts, and these chloroplasts they contain chlorophyll, and these are the sites of photosynthesis. Now what is photosynthesis? Photosynthesis ये भी पूछा जाता है बेटा एग्जाम में क्वेश्चन. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants make their own food from carbon dioxide, water by using sunlight in presence of chlorophyll. This means photosynthesis is that process by which green plants make their own food by using carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Here you also remember these are raw materials for photosynthesis. ठीक है बेटा. और वही अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, आपने यही लिखना है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. क्या क्या है बेटा? सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड क्लोरोफिल. ठीक है, got it. Now photosynthesis, here we will write chemical reaction of photosynthesis. What's chemical reaction of photosynthesis? Carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6 plus oxygen. C6H12O6 is glucose. ठीक है. और जो ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट टेक्स फ्रॉम एयर, वाटर इट टेक्स फ्रॉम सॉइल एंड light this is from sunlight and it makes C6H12O6 plus oxygen. ठीक है बेटा. This is chemical reaction of photosynthesis. ये भी कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा बेटा कि इट इज़ नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यू नो नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट शुड बी इक्वल टू ऑन राइट हैंड साइड. बट यहाँ ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है. अगर हम इसको बैलेंस करेंगे 6 times कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 times वाटर, इट गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन है दैट गोज इनटू द एयर एंड दैट्स यूज्ड बाय प्लांट्स. ठीक है, ये भी याद रखो आप यहाँ पे. दिस इज केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये भी कभी एग्जाम में पूछी जाती है. ये व्हाट्स गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देखो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सपोज दिस इज ए प्लांट, इट्स स्टेम एंड इट्स these are roots, and the carbon dioxide gas that plant takes that is required by plant in making food,
that is taken from air. ठीक है, and this carbon dioxide gas, it enters the plant through leaves through tiny pores that are known as stomata. And water required for making food is taken from the soil. This means जो water है, how that water is taken, that is taken through soil, from soil through these roots. ठीक है, water is taken from soil through these roots. ठीक है, and this water is transported to the leaves. This water is transferred from this soil through the roots and stem. फिर जब roots absorb करते water फिर through stem जाते हैं कहाँ, leaves में. And the sunlight जो है बेटा, that provides energy to carry out the chemical reaction that is involved in the preparation of food. और जो ग्रीन कलर पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, एंड इसकी जो फंक्शन है क्लोरोफिल की, इसकी क्या फंक्शन है बेटा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग सनलाइट. ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस इसमें प्रोड्यूस होता है एज बाय प्रोडक्ट, दैट गोज इनटू द एयर. ठीक है, this means this water it takes through roots and carbon dioxide it takes from air. ठीक है, and it has chlorophyll, green leaves have chlorophyll in it, and by this chlorophyll it absorbs sunlight and it makes food glucose. and जो इसमें होता है, जो stored food इस leaf में रहता है, that is stored in form of starch. This means the food prepared by the green leaves of a plant is in the form of simple food, that is glucose. and जो ग्लूकोज मेड होता है, जो ग्लूकोज बनता है इन लीव्स में, दैट इज सेंड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट गोज to the roots and it also goes to other branches of a plant. It is the flow of food is both downwards as well as upwards. ठीक है, and जो ग्लूकोज होता है दैट इज मेड इन द लीव्स, दैट इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बेटा दैट इज चेंज इनटू अनदर फूड विच इज नोन एज स्टार्च. ठीक है, that is known as starch, and this starch that is stored in the leaves of a plant. and जो ये glucose and starch है, they both are carbohydrates. ठीक है, और जो ये carbohydrates बनते हैं by photosynthesis, they contain chemical energy in them. These green plants जो है they convert this means ये chemical energy कहाँ से आती है इनमें, ये कहाँ से आते हैं, ये जो sunlight है that's absorbed during the process of photosynthesis, that is convert, this means that light energy that is converted into chemical energy during the process of photosynthesis. और जो food prepared that is prepared during photosynthesis that provides energy to a plant for which it needs to grow. and when we eat the plant foods like food grains हम खाते हैं, fruits खाते हैं, vegetables खाते हैं, जो एक chemical energy इनमें store होती है that's released in our body through respiration. वो another life process that takes place in our body, that from that food energy is released through respiration. हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है what is photosynthesis first and second chemical reaction of photo. These are most important, ये that these questions may be asked in examination. and what are our materials for photosynthesis? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. This means जो ये photosynthesis process है it takes place in following steps. photosynthesis process में क्या क्या होता है बेटा, फर्स्ट जो होता है, जो इस सनलाइट होती है इसकी एब्जॉर्प्शन होती है बाय क्लोरोफिल. जो ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन होती है बाय क्लोरोफिल. जो ये क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट, दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग सनलाइट. सेकंड जो है बेटा, जो ये लाइट एनर्जी होती है दैट प्लांट दिस ग्रीन लीव्स रिसीव फ्रॉम दिस सनलाइट, that light energy that gets converted into chemical energy. और उससे क्या होता है, जो ये water होता है it gets split into hydrogen and oxygen. जो water in leaves में होता है, जो plant absorb करता है through roots, that water gets split into hydrogen and oxygen. ठीक है बेटा. और थर्ड जो है बेटा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की.
by hydrogen to form carbohydrates. Reduction beta, you know, chemistry में पढ़ा होगा. Reduction means addition of hydrogen or removal of ऑक्सीजन. दिस मीन जो एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे हमने अभी लिखा है इधर पे, दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस मीन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें जो होता है कार्बन, इसको एडिशन होती है हाइड्रोजन की एंड इट फॉर्म्स ग्लूकोज. दिस मीन इन फोटोसिंथेसिस देयर इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज. एंड कैसे होती है इसकी रिडक्शन? बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी. ठीक है, these are the process, or we can say these are the steps which takes place in photosynthesis. ये भी पूछा जाता है what is how photosynthesis takes place. आपको बोलना है फर्स्ट इसमें होती है absorption of sunlight by chlorophyll, second conversion of light energy into chemical energy, third इसमें होता है reduction of carbon dioxide into carbohydrates. ठीक है, and they can take place at different times. जो photosynthesis है बेटा, it takes place at different times because it takes place only in presence of sunlight. For example, जो desert plants है, they take up carbon dioxide at night. Desert plants जो है like cactus है, they take carbon dioxide at night and made an intermediate product जो which is acted upon by sunlight, absorbed chlorophyll when the sun shines during the next day. आई बात समझ में? दिस मीन्स जो ये फोटोज इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड वो टेक अप करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर एट नाइट, लेकिन वो बनाते हैं एक प्रोडक्ट लेकिन विच इज एक्टेड अपॉन बाय सनलाइट ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है, this means this is how photosynthesis takes place in plants. Thus you can remember जो nutrition है that is autotrophic in plants, and how plants make their own food. They make their own food by the process of photosynthesis. ठीक है, thank you.